once again to Lukmaan IAS, your favorite channel for all of your UPSC CSE needs. So today's perspective topic is with regard to our fundamental rights enshrined in Part 3 of the Indian Constitution, exactly talking about Article 21. Taking the reference of the case Aruna Shanbok, talking about the concept, actually the euthanasia. Euthanasia, अगर हम साफ शब्दों में बात करें, इच्छा मृत्यु, that is in English it is termed as suicide. So is suicide legal in India? तो अगर हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को लेकर चलें, तो क्या इंडिया में सुसाइड लीगल है? So talking about the term, no, it's not. You can be prosecuted under section 309 of the Indian Penal Code. अगर एक इंसान सुसाइड करते हुए पकड़ा जाता है तो सेक्शन 309 के तहत आईपीसी के उस पर मुकदमा भी चल सकता है. तो अब ऐसे में यूथेनेसिया, जो कि अपने आप में इच्छा मृत्यु यानी कि सुसाइड की बात कर रहा है, उसको इन दोनों से रिलेट कैसे करें, और एक्चुअली में अरुणिमा शानबॉग का दरअसल केस क्या है? तो आइए सब कुछ शुरुआत से लेकर चलते हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. इट वाज द ईयर 1973. अरुणिमा शानबॉग की अगर हम बात करें, अ नर्सिंग ऑफिसर, दैट इज अ नर्स, साफ शब्दों में अगर हम बोलें, मुंबई के KEM हॉस्पिटल के अंदर अपनी सर्विस देती हुई बहुत ही हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंट, पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन्ड नर्स, वन ऑफ दोस पॉपुलर फिगर्स इनसाइड द इंस्टीट्यूट, दैट इज इनसाइड द हॉस्पिटल, right, who is known for her, like, too much of the philanthropic activities, too much of the love, care and concern towards the patient. Aruna Shanbok was always welcomed and appraised for her tireless duty, right? Okay, so it was the year 1973 when Aruna Shanbok was actually assaulted by one of the hospital staff only, right? He assaulted her, sodomized her actually, okay, जिसका actual जो clear cut सबूत है वो आज तक हम किसी भी कोर्ट में रिप्रेजेंट नहीं कर पाए. Okay, so she was actually a rape victim, but apart from that, she was assaulted very brutally. She was assaulted with a dog chain, okay, around her neck, and because of which oxygen supply to her brain got stopped. Hence, as a result, because of this assault, she survived though, but she went into a vegetative state for the next 40 years. 40 सालों तक वो वेजिटेटिव स्टेट में रही. अब एक टर्म आपके सामने निकल कर आया, वेजिटेटिव स्टेट क्या होता है? तो वेजिटेटिव स्टेट का मतलब जहां पर बॉडी जिंदा तो है लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर रही है. जैसे कि एक रेफरेंस के तौर पे अगर हम आपको बताएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक मूवी देखी होगी मुन्ना भाई MBBS, उसके अंदर एक कैरेक्टर दर्शाया गया है आनंद भाई के नाम से. तो आनंद भाई को अगर आप देखेंगे, वो जो कैरेक्टर उनके अंदर दिखाया गया है, दैट मींस वो जिंदा तो है लेकिन वो रिएक्ट नहीं करते हैं, उनका ब्रेन फंक्शन करना बंद कर चुका है. उसी तरीके से कुछ हुआ था हमारी ब्रेन, जो ब्रेव हार्ट अगर हम बात करें, टायरलेस ड्यूटी, रेस्टलेस ड्यूटी देने वाली अरुणिमा शानबॉग की अगर हम बात करें, तो बिकॉज ऑफ द चोकिंग ऑफ द नेक, ऑक्सीजन सप्लाई उनके ब्रेन तक जाना बंद हो गया, एंड शी survived the assault. बट अगले 40 सालों तक वो जिंदा तो थी पर जिंदा नहीं थी, राइट? यानी कि सांस तो ले रही थी लेकिन जिंदगी नहीं जी रही थी, राइट? सो इट वाज ईयर 1980, 7 years after, when for the first time KEM Hospital of Mumbai thought to go on the process of taking away the bed of Aruna Shanbok so that it can be given to some another patient. But at that very same time, humanity woke up, and the nurses of the KEM Hospital, along with the other hospitals of Mumbai, they went on to the streets for the sake of strike. And hence, as a result of the strike, KEM Hospital had to take back their plan of taking away the bed of Miss Aruna Shanbok, right? अगर हम बात करें अरुणिमा शानबॉग की स्टोरी की, तो एक बहुत ही दिल दहला देने वाली स्टोरी है. वो अपने ही हॉस्पिटल में काम कर रहे एक डॉक्टर साहब के साथ उनकी एंगेजमेंट भी हो चुकी थी, वो अपनी नई जिंदगी भी शुरुआत करने वाली थी, जब अचानक से उन्हीं के हॉस्पिटल स्टाफ ने उनके पर असॉल्ट किया, अटैक किया, और इतना ब्रूटली अटैक किया कि खुद इंसानियत भी शर्मसार हो गई, राइट? तो ये अटैक हमेशा जब भी हम देखते हैं तो हमें यही समझ में आता है, एक ही लाइन आती है हमेशा अखबारों में, न्यूज चैनल्स के ऊपर, इंसानियत फिर हुई शर्मसार एक बार और, राइट? सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट हियर, 40 years later,
after an assault. She died on 18th of May 2015 because of pneumonia. Cause of death बहुत clear था, pneumonia. ठीक है, 18th of May 2015 she died, right? 40 years later, अब उनके assault के 40 साल बाद लगभग. अब इस दौरान बहुत कुछ हुआ अरुणिमा शानबॉग से रिलेटेड. अब हम बात करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के आर्टिकल 21 को ध्यान में रखते हुए. What happened in the course of the time? Another philanthropic personality. जिस बोलते हैं ना philanthrope मिल ही जाता है. एक अच्छी चीज अट्रैक्ट कर ही लेती है. An activist known as Pinky Virani. She got to know about the case of Arunima Shanbog. And when she saw her, that in what condition Miss Arunima is right now going through. So she filed a petition inside the apex court of the nation, that is the Supreme Court of India, in the year 2011, where she asked the Honorable Court to provide Miss Arunima Shanbog with euthanasia. Obviously, euthanasia दो टाइप के होते हैं हमारे पास, एक्टिव यूथनेसिया एंड पैथिक यूथनेसिया. यूथनेसिया जैसे कि हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया, इच्छा मृत्यु. अब यूथनेसिया का टर्म अगर हम बात करें हमारे कोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से, हमारे इंडियन लॉज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे फंडामेंटल राइट्स के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, आईपीसी और फंडामेंटल राइट्स दोनों को लेकर अगर हम चलें, दोनों साइड बाय साइड चलेंगे. एंड आईपीसी इन कॉन्ट्रास्ट विद फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स इन कॉन्ट्रास्ट विद द आईपीसी. दैट इज आर्टिकल 21 इन कॉन्ट्रास्ट विद 309 and of the IPC, and 309 in contrast with Article 21 of the Indian Constitution. Okay, so what do we have here? The whole scenarios, what explains us? 2011, the plea, that is the petition filed by activist, I'll call her a very wonderful soul, Pinky Virani. The petition was rejected by the Honorable Court on the grounds that we do not have any separate law available for such kind of an activity known as active or passive euthanasia. But this particular case compelled the Honorable Court to go ahead with the thought of euthanasia. Okay, and 7 years later, talking about specifically in the year 2018, Supreme Court gave up a very wonderful judgment taking about the references of the Arunima Shanbog case 1973, talking about the Jian Kaur versus State of Punjab case, and talking about P. Rathinam versus Union of India case. तो ये तीन केसेस हैं जो हमें ध्यान में रखना है. That is Arunima Shanbog case. Apart from that, Jian Kaur versus State of Punjab and P. Rathinam versus Union of India case. Okay, or Union of Kerala case, or in fact, okay. So ये तीन केसेस हैं जो हमें लेकर चलने हैं अपने दिमाग में. हमेशा जब भी आपके सामने यूथनेसिया से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं तो क्लियर है, आपके सामने ऑप्शंस रहेंगे जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, पी रथिनम केस एंड शानबॉग केस. लेकिन मेंस में जब आप आंसर लिख रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक व्हाइल डीलिंग विद द कांसेप्ट ऑफ यूथनेसिया. ओके, सो इन 2018 सुप्रीम कोर्ट गेव अ क्लियर कट वर्डिक्ट on euthanasia that it states like, in the rarest of rare case, once again, rarest of rare case and not the general cases, first of all, in rarest of rare case, euthanasia, a passive euthanasia can be given to the patient. Okay, so in that one particular segment what we can see here, 2018 से ये concept आ गया है अरुणिमा शानबॉग के इस दुनिया से विदा लेने के 3 साल बाद. Nevertheless, देर आए दुरुस्त आए, कोई उसमें बुराई नहीं है. Okay, so is euthanasia legal in India as of now? What is the answer? Yes, euthanasia is legal in India as per the orders of the Honorable Supreme Court of 2018. Right? Taking about the reference, Arunima Shanbog case, P. Rathinam, and the Jian Kaur versus State of Punjab case. Now, talking about Article 21. Right to life and personal liberty. So Supreme Court in these all three cases came up with the enlightenment concept, with the definition concept of Article 21, enlightening the phrase, or actually highlighting the phrase of right to die. Does right to die or right to life also comes up with right to die? And then Supreme Court gave a clear-cut verdict. To live a life with health is something that encompasses or that makes up the basic structure of Article 21. Because what is the definition of Article 21? What is the definition of life? So definition of life, when you talk about Supreme Court and various judgments has given,
like right to have clean water, clean environment, right to sleep, right to entertainment, right to work. Okay, then apart from that, right to eat, right to food. They are all your fundamental rights under Article 21, though not written, explicitly explained. Right, implicitly not written but explicitly explained, that Article 21, yes, it talks about right to food, right to sleep, and in that very case, right to health. Okay, it is there. And when the Supreme Court observed that when a person is there in a vegetative state, that means body जिंदा तो है लेकिन किसी काम की नहीं है, तो ऐसे में वो इंसान अपने आप में एक यातना झेल रहा है, वो इंसान अपने आप में एक बहुत बड़ा दर्द झेल रहा है। तो ऐसे में उस दर्द से उसको आजादी देने के लिए यूथनेसिया फॉलो किया जा सकता है, राइट? बट that too in the rarest of the rare case, where we have to see the statement that right to life comes up with the right to health. Health, that means it is one of the vital elements of the life, because of which, in the absence of which, life cannot sustain. And hence the Supreme Court gave up the judgment. Okay, 2018 to be very specific, the judgment came out. Okay, so guys, please remember, right to die, that is, suicide is not permitted. Okay, still today, if a person is seen or caught in the attempt of suicide, then the person is prosecuted under section 309 of the Indian Penal Code. So suicides, they are not permitted by the laws of the nation. Then comes the concept of euthanasia, taking about the reference of the vegetative state and talking about the concept of health. It can be given to an individual in the rarest of rare case, right? And Aruna Shanbok case was the rarest of rare. 40 years, 40 साल तक वो होश में नहीं आई, जिंदा तो थी लेकिन होश में नहीं थी, and ultimately 18th of May 2015 she gave a bit adieu to the world. But her farewell gave up this question, in front of us. Okay, gave us this question, that is it not time for us to change up the laws with regard to the euthanasia on the nation? इच्छा मृत्यु क्या होनी चाहिए हिंदुस्तान, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर? तो yes, in the rarest of rare case, Supreme Court immediately 3 years later gave up the judgment that yes, there shall be euthanasia, but in the rarest of rare case. अब rarest of rare case दरअसल क्या है? So to be very honest, there is no such definition existing with the name rarest of rare case. Okay, so ध्यान रखिएगा, what is the definition of the rarest of rare case? So according to the judgments we have seen so far, it is a situation where we see some very extreme events taking place. Now, what are the extreme events? In accordance with the principles of laws and humanities, they are not yet defined, or they are yet to be defined. So talking about the definition of rarest of rare case, it is not yet defined, first thing. Then second thing, right to life under Article 21 of the Indian Constitution, talking about the life with liberty and health, do provides us the right to die, and that too in euthanasia, that too in the rarest of rare case. Okay, everyone. So we have to figure about all of these things. So please remember the concept. Suicide is not permitted. Section 309 of the IPC is still there. Euthanasia is permitted in the rarest of rare case. Okay. And then in the final stages of the session, I would just like to pay my homage and respect to the great activist personalities like Pinky Virani, who stood up for the wonderful cause, who stood up in order to protect the laws of humanity. And apart from that, when we talk about the very mysterious case of the culprit, अगर हम बात करें अरुणिमा शानवॉक के बारे में, तो हम डिस्कस कर रहे हैं 1973 में उनके ऊपर असॉल्ट होता है, वो उनको बॉडी में ऑक्सीजन, ब्रेन में ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाता है और 40 साल तक वो वेजिटेटिव स्टेट में रहती हैं. बट हियर इज समथिंग वी आर मिसिंग. व्हाट एक्चुअली हैपेंड टू द कल्प्रिट? क्या उसको सजा हुई? सच्चाई बहुत दिल दहला देने वाली है. अगर हम रिपोर्ट्स की माने, तो जो कल्प्रिट था
उसकी क्लियर फोटो अभी तक हमारे पास नहीं है. द फैक्ट इट्स प्रोवाइड्स अस ह्यूज टेंशन. 7 साल के लिए उस कल्प्रिट को सजा हुई. 7 years. In that 7 years, he was out on bail for a couple of times even. Right? It was not a rigorous imprisonment, first of all. So 7 साल से भी कम की सजा उसने काटी. और जो उस पर चार्जेस थे उसमें कहीं पर भी रेप मेंशन नहीं था. यानी कि सेक्शन 376, इनफैक्ट 377 भी वहां पर होना चाहिए था, जो कि उसमें मेंशन नहीं था. ही वॉज जस्ट चार्ज्ड ऑन द केस ऑफ असॉल्ट. राइट, अटेम्प्ट टू मर्डर एंड असॉल्ट, हर्टिंग समवन, ओके, विथ प्रोवाइडिंग ग्रेव इंजरीज एंड ऑल. 7 साल से भी कम का टाइम ये इंसान जेल में बिताता है. और करीब 1980 के आसपास ये जेल से वापस भी आ जाता है, बाहर भी आ जाता है. और उसके बाद अपना, अकॉर्डिंग टू दिस इज, आई डोंट नो वेदर इट इज रियलिटी और नॉट, अ मिथ बियॉन्ड ट्रुथ और ट्रुथ बियॉन्ड मिथ, वी डोंट exactly know, but what the information tells us, what internet tells us about this particular culprit. So it tells us that कि मुंबई में जब इनको जेल में डाला गया और उसके बाद जब ये जेल से बाहर आया तो फिर अपना 1980 के बाद ये अपना नाम बदलकर ये अपने एंसेस्ट्रल विलेज जो है वहां पहुंच गया और किसी कंपनी में जो एज अ क्लीनर और एज अ कुछ गार्ड वार्ड की नौकरी करने लग गया. यानी कि इसकी जिंदगी बहुत नॉर्मल चली. हम बात करें अगर पिंकी वीरानी, मैडम पिंकी वीरानी की, तो उन्होंने ढूंढने की बहुत कोशिश करी बट वो मिला नहीं. लेकिन बहुत टाइम के बाद, कुछ 2010-12 के आसपास के टाइम पीरियड में, एक जर्नलिस्ट ने इनको ढूंढा समहाउ. ओके, लेकिन फिर भी कंफर्म नहीं हो पाया कि ये वही कल्प्रिट है या नहीं. और फिर उससे पूछा गया, उसने एडमिट भी किया कि यार तुमने असॉल्ट किया था क्या. ही सेड हाँ मैंने असॉल्ट किया था, बट आई डिड ओनली असॉल्ट. उसने ऐसा क्लियर कट स्टेटमेंट दिया कि मैंने सिर्फ असॉल्ट किया. राइट, ही गेव द स्टेटमेंट दैट ही वाज द वन हु असॉल्टेड बट ही वाज नॉट द वन हु रेप्ड अरुणिमा शानबॉग. राइट, दैट मीन्स कहीं ना कहीं अब एक दिल दहला देने वाली बात फिर से है कि अगर ये इंसान सच बोल रहा है, दो काश ये सच नहीं बोल रहा. राइट, जो अभी अभी तो ये जो कल्प्रिट है इसकी भी डेथ हो चुकी है. ओके, सो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स वंस अगेन, ओके, सो अगर ये इंसान सच बोल रहा है तो यानी कि जो एक्चुअल कल्प्रिट था, पता नहीं है कि नहीं है, वो तो फिर कभी कानून के दायरे में और सजा के दौर में तो आया ही नहीं. वो यानी कि वो तो खुलेआम अपनी जिंदगी बिता रहा होगा. राइट, अगर ये इंसान जो ये कल्प्रिट था अगर वो सच बोल रहा है तो कि उसने सिर्फ असॉल्ट किया. दैट मीन्स इट्स टाइम फॉर अस वंस अगेन टू थिंक ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन. Each and every theories, each and every principles are to be followed while investigating any case, bigger or smaller, whatever the scale of the case is. And taking about the concept of humanity, 1973 जब हम देख रहे थे केशवानंद भारती केस, जब हम देख रहे थे कि हाँ हो चुका है शिमला एग्रीमेंट, ठीक है, 1 साल बीत भी गया उस बात को, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस अलग चल रहे हैं, हम जो है अपने 4th 5 year प्लान्स वगैरह निकाल रहे हैं, 4th और 5th 5 year प्लान्स तक भी हम आ गए हैं. राइट, फिर उसके बाद से हम जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे ही मुल्क के अंदर, इसी मुल्क के हिंदुस्तान के अंदर एक और ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा हो रहा था जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मोरल्स आर्टिकल 21 को हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया. राइट, कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी is also something which is entitled inside Article 21 of the Indian Constitution. Right? So this is all the facts, guys. Okay, with regard to Article 21, right to life, is right to die also there as a fundamental right? Yes, it is, but not as a medium of suicide, but as a medium of euthanasia. That is a very big medical condition is there to a patient whose body is alive but not responding. So in that case, euthanasia can be given. Yes, India doesn't even allows right now, okay, the present date, till date, we do not permit active euthanasia.
But yes, in rarest of rare case, Honorable Supreme Court in the year 2018 gave the final verdict that in the rarest of rare case, passive euthanasia can be given to the patient. Remember guys, active euthanasia is something which is still not permitted. Okay, so I hope you learned a lot on this particular issue, and it will help you while framing your answers in your UPSC CSE mains examination while dealing up with the questions related to such type of issues. Okay, so thank you for joining guys, thank you for listening, see you all soon. Till then, bye bye, take care, study well, and yes, Jai Hind. The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Lukmaan IAS and make your UPSC dreams come true. Download the app now.